My dear respected students, I have just begun with the concept of PPP as today I have just discussed that same concept with you, but due to some time constraints, I'm not going to elaborate that concept. So I just take this opportunity to discuss things with you. My dear respected students, here it is when we talk about the concept of PPP, where PPP stands for, as we have earlier discussed also, that is a point-to-point protocol. Point-to-point protocol means, my dear respected students, some points we are supposed to remember for the same, that this point-to-point protocol is work on the data link layer of OSI model. Sir, my question is that what do you understand by a OSI model? My dear respected students, there is a 7 layers in OSI model. That is, OSI stands for Open System Interconnection. And just remember this thing, that this PPP is a protocol which is supposed to work on a data link layer. And what they do, I'm just going to elaborate this concept with the help of one example here. My dear respected students, I'm just going to consider here that what do you understand by PPP? As I have discussed with you all, my dear respected students, the PPP stands for point to point protocol. This is the concept, or we can call it as, this is the full form of PPP. That is a point-to-point protocol. And here it is what happened. In such case, for example, we are having a ISP, my dear respected students. I'm just using a word that is a ISP. Here it is ISP, whereas ISP is supposed to stand for Internet Service Provider. This is to be called as a Internet Service Provider. When we talk about, hopefully, I think so that the concept is clear, that what do you understand by Internet Service Provider. Otherwise, for better clarity, I'm just going to discuss with you that, for example, Airtel is an Internet Service Provider. After that, BSNL is an Internet Service Provider. Geo is an Internet Service Provider. And there is many more Internet Service Provider will be there, which provides us the facility of internet as well as calling. So when we having an internet service provider in our area, and if we get the connectivity, for example, I'm just going to draw this layout here. For example, I'm just going to draw this layout here, and what happened here, my dear respected students, here it is 1 and here it is 2. I'm just going to draw this. Why so? I'm just want to discuss things with you, that here it is directly connection is being provided to a particular place, or we can call it as, otherwise अगर मैं सरल शब्दों में व्याख्यान करूं तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप कंसीडर करें और देखें कि जब कनेक्शन डायरेक्टली मुझे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा मेरे घर तक मिल रहा है, मेरी जगह तक मुझे प्रोवाइड किया जा रहा है, उस प्रकार की कार्यशैली को, उस प्रकार की कार्य क्षमता को हम क्या कहेंगे? मैं उसे कहूंगा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. अब हुआ क्या? आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, सर अगर ये डायरेक्टली, जैसे अगर मैं आपको इसके उदाहरण के तौर पे आपसे विचार विमर्श करूं और मैं आपसे कहूं उदाहरण के तौर पे कि मेरे प्यारे शिष्यों, अगर आप देखें कि अगर हम एक शब्द के बारे में विचार करें, LEASED, लीज्ड लाइन connectivity, and I'm just going to talk about the concept of leased line. In such case, what happens? There is a dedicated link is supposed to be established in between ISP provider, from ISP provider to my home, to my place. That is to be called as a
leased line connectivity, which is dedicated for me and ISP. There is no other interruption, or there is no other connectivity is there in between these two. Next thing, my dear respected students, what I'm going to elaborate is, now look here, this is the connectivity. Now what I want to discuss is, for example, there is one cable in between ISP and in between different houses. For example, I'm just going to draw here, and here it is, for example, sorry, here it is, for example, we having house number one, here it is, we having house number two, and for example, here it is house number three. I just want to mention this, here it is. For example, it is to be called as H1. Okay, great. Here it is to be called as H2. Great. And what happened here? It is H3. This is house number 3. And what happened with the help of some device? For example, I'm just taking the example of a device which is being used for communication. And I'm just going to mention the name of that particular device here. For example, that device is to be called as a router, R-O-U-T-E-R, that is called as a router. My dear respected students, now we are not talking about point-to-point protocol. I'm just giving an example that if the connectivity is there in from ISP, and after that they use some communication medium for transmitting the signals to multiple location, for example router, and what they do now, they are just supposed to use this connectivity and send with the help of router to house number 1, house number 2 and house number 3. मेरे प्यारे बच्चों, आपके चरणों में विनम्र विनती है, जब हम पॉइंट टू पॉइंट के बारे में संदर्भ में विचार विमर्श करते हैं, उस केस में मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां पे आईएसपी से लेके आपके घर तक एक डेडिकेटेड कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, जिस कॉन्सेप्ट को, जिस माध्यम को हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। और जब हम अदरवाइज जो आईएसपी से कनेक्शन लेते हैं और किसी डिवाइस के थ्रू अगर उसे मल्टीपल लोकेशंस पे भेजते हैं, तो उसको हम पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो हमारे पास डेडिकेटेड नहीं है, वो हमारे लिए डेडिकेटेड नहीं है। उदाहरण के तौर पे अगर आप बोले तो मेरे बच्चे, मेरे प्यारे शिष्य जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं BROAD, ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी, मैं उदाहरण दे रहा हूं, BROAD, ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी, ये पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का उदाहरण इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के साथ शेयर किया जाता है। एक बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा, जिसको हम कहते हैं इंक्रिप्शन, जहां पे इसमें पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल में एक प्राइवेसी या सिक्योरिटी भी यूज की जाती है, जैसे कहते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मींस we are supposed to check whether the person is authorized or not. Authorized, how we are going to check? With the help of username and passwords, with the help of biometric machines and many more, we are supposed to check the authenticity of that person. But if we are talking about the real life example, that is email account, then we are supposed to check the authenticity with the help of there is username and password. And one more important thing, most important thing, my dear respected students, that is to be called as encryption. Sir, what do you understand by encryption? ENCRYPTION, encryption. Sir, what do you understand by encryption? For example, I having a particular number or a particular data which I want to send to from source to destination. Here it is what happened. For example, I having a data, kindly concentrate my dear respected students, it's my humble request. I having a data, that is I want to send a data that is 1241. For example, I'm just considering an example, 1241, and here it is, this is the number I want to send, but I'm not want to send this in a as a plain text. I want to encrypt this information. So what happened? I just consider
what I just consider here, I am just going to use a format. For example, I'm just going to write here, okay, here it is A, okay, here it is B, okay, here it is C, okay, here it is D, okay, here it is E. For example, these are the numbers. And now we are supposed to write here, for example, this is for 0, this represents 1, this represents 2, this represents 3, and this represents, for example, 4. Now, what do you understand by encryption, my dear respected students? For example, here it is 0 is representing A, B representing 1, and so on. So what happened here, my dear respected students? Here it is, I'm just going to convert this number now, and in spite of writing 1, I'm supposed to write here B, if the concept is clear. In spite of 2, I'm just going to write here C. In spite of writing 4, I'm just going to mention E. And in spite of writing 1, again, I'm going to write D. It means, my dear respected students, when 1241 is to be considered and converted with the help of encryption in a particular format, and that should be sent over a communication medium, this is to be considered as one of the secure way. And from source, when encrypted data is being sent on the destination, again with the help of this particular, format, I'm just again going to decrypt that data as in the destination. In the destination, I have received this particular code, that is BCEB. And what we do, again, we are supposed to check here. And what we are supposed to do is, yes, B is 1. Okay. Sir, C is 2. Okay. Sir, E is 4. And sir, B is again 1. This concept is to be called as decryption. Encryption and decryption. Hope, I think so the things is supposed to be cleared. Now again, I'm just going back, and now we are just going to talk about some of the theoretical part. PPP is the most common used data link protocol. It is a protocol used to establish a direct connection between two nodes. It can provide a connection or provide connection authentication, authorization, transmission of encryption and compression. It is used to connect the home PC to the server of ISP, that is internet service provider, and the provider server can respond to your request, forward it to the internet server, and then forward response back to you. My dear students, hope the things will be clear, and I think so things will be clear, and it is better for you to understand things in a more better way, on more with more clarity. Okay. uh, okay, I am just going to discuss next concept with you. Here it is, my dear respected students. Next concept, what we are supposed to. Okay, my dear respected students, next thing is HTTP. Okay, great. I think so that HTTP is, you are familiar with HTTP. I think so. That HTTP stands for, I think so, that is Hypertext Transfer Protocol. And I'm very much sure that whenever we are supposed to type anything, for example, that is www.google.com, the one text is supposed to be prefixed there is HTTP. And some of you is supposed to ask me a question, sir, on my system they display HTTPS. Okay, my dear respected student, this is a protocol, and HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol, whereas HTTPS stands for, there is only one difference, that HTTPS stands for a secure hypertext transfer protocol. My dear respected students, again, I'm just going to discuss the concept with you, and then we are supposed to again come back to a theoretical part. Theory. Okay,
Here it is. I'm just going to discuss with you all. The concept is, my dear respected student, hypertext transfer protocol. Hypertext transfer protocol. My dear respected students, what I'm going to do here, my dear respected students, here it is, hypertext transfer protocol, or here it is, a secure hypertext transfer protocol. What happened here? Here it is, very much, you are supposed to concentrate on this. One of the most important thing we are talking about, here it is, my dear respected students. For example, I having one device here, which is to be considered as PC1. And for example, I having one device here that is a web server. I'm just going to mention this here. This is to be considered as a web server. Sorry, this is to be called as a web client. Okay. We can also consider as a browser, because whenever we want to access internet on our computer, we are supposed to use a special software that is to be called as a browser. Okay. And here it is, my dear respected students, here we can call it as a web server. We are supposed to call it as web server, and we are supposed to cut, my dear students, this browser I'm supposed to cut here. Okay. And what happened now, what is important in such case, again you are saying I'm repeating the same thing, but kindly concentrate, my dear respected students. Again, there is a dedicated connection, or there is, I'm not sorry, I'm not using a word dedicated connection. There is a connection in between these two devices, and with the help of web browser, as I earlier discussed with you all, that my dear respected students are having a IP address, and hopefully this is not the topic that I'm supposed to discuss again, because I know that you all know what do you understand by IP address. Okay, here it is, the concept that is an IP address, and what we are going to do from the web client, I'm supposed to send one, I'm just going to adjust this, I'm just going to send one request from web client, and the request is that I am on 192.12.35.10, that is google.com. This is first is my web address, sorry, IP address, and second is the website which we are supposed to access, and for the same we are supposed to send the request to the web server. My dear respected students, again, because TCP/IP is one of the most important protocol which are used. TCP/IP is the one which is supposed to use that process for sending or establishing a link in between these two. Okay, what we are going to do here is, this is internet, I think so. This is the internet. We are considering that this is the internet, and the data is being transmitted from web client to web server. The most important thing is supposed to be remember that always when something is going to be sent, that should be sent in the form of web file. I'm writing here. Whenever we are going to send from source to destination, the thing is transferred in the form of web files, and these web files are in the form of text. Okay, these are in the form of audio audio. These are in the form of videos as well, any of the form. But these are the web files, because we are supposed to interact in between web client and web server. Okay, what happened next? This is clear that what we are going to send or what we are going to deliver to each other. In such case, when we are talking about, when we are sending a request to open google.com to a web server, here it is a connection. Here it is a connection is supposed to be established in between these two, in between these two devices. This is a request is supposed to be sent to a server. Now request is supposed to be sent to a server. This request is sent. Okay. Now what happened when the server is supposed to be accept that request, and at that time when request is sent from web client to a web server,
वेब क्लाइंट इज नॉट सपोज टू वेट फॉर द टाइम, वो उस समय तक प्रतीक्षा नहीं करेगा कि जब तक उसको डाटा ना मिल जाए, क्योंकि जब ये डाटा भेजा गया, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो थी, वो आपके जो वेब क्लाइंट था उसके द्वारा दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी जो वेब सर्वर तक पहुंचाई गई। वो एक आपके सिस्टम का यूनिक एड्रेस था और एक आपकी वो डिमांड थी जो आप वेब सर्वर से फुलफिल करवाना चाहते थे। अब क्या किया, जब भी वेब सर्वर को टाइम मिला, उसने क्या किया, टाइम मिलने का मतलब है उसने उसको रिस्पॉन्ड किया, एंड व्हाट दे आर रिस्पॉन्डिंग इन सच वे, दे रिस्पॉन्ड दैट पर्टिकुलर थिंग, उसने इस चीज को रिस्पॉन्ड किया google.com को, और उसने रिस्पॉन्ड करके जिसको किसके पास भेजा, वेब क्लाइंट को। अब देखिएगा, सोचिएगा ध्यान से, और जैसे ही उसने उसको डाटा प्रोवाइड किया, दोबारा जो कनेक्शन उन दोनों के बीच में था वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय। दो शब्दों का प्रयोग करूंगा, दो शब्दों का प्रयोग जो बहुत महत्वपूर्ण है इस केस में, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के केस में। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, कृपया करके ध्यान दीजिएगा। मैं पॉइंट नंबर 1 डाल रहा हूं और यहाँ पे लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मैं कहता हूं STATELESS, स्टेटलेस। स्टेटलेस का मतलब क्या हुआ, मैं बड़ी महत्वपूर्ण चीज के बारे में विचार कर रहा हूं। स्टेटलेस का मतलब हुआ नो सेशन इंफॉर्मेशन इज रिटेन्ड ऑन सर्वर। मतलब जब भी वेब क्लाइंट के द्वारा कोई रिक्वेस्ट भेजी गई वेब सर्वर को, उसने इसको सर्व करने के बाद, उसको कंप्लीट करने के बाद, किसी भी प्रकार का डाटा अपने वेब सर्वर में कि मैंने पिछली रिक्वेस्ट क्या फुलफिल की है उसके बारे में उसने कुछ भी स्टोर नहीं किया, उसके बारे में उसने कोई भी चीज नहीं रखी अपने पास, उस चीज को नहीं रखा। और अगर आप मुझे कहें तो मैं बोलूंगा नो सेशन इंफॉर्मेशन इज रिटेन्ड। उसने अपने पास कोई भी सेशन की इंफॉर्मेशन को रिटेन नहीं किया। किसने रिटेन नहीं किया, वेब सर्वर ने, वेब सर्वर ने। और जब मैंने देखा, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे विचार करना चाहूंगा, सेकंड थिंग इज टू बी कॉल्ड एज कनेक्शन लेस। कनेक्शन लेस, आप कहेंगे सर इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? बेटा, कनेक्शन लेस का शाब्दिक अर्थ जो है, वो शाब्दिक अर्थ इसके बारे में ये है कि ये क्या करता है, दे नेवर क्रिएट्स अ परमानेंट कनेक्शन। मैं यहां लिख रहा हूं आपके लिए, मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं और मैं लिखता हूं नेवर क्रिएट्स अ परमानेंट NENT कनेक्शन, नेवर क्रिएट्स परमानेंट कनेक्शन। ये परमानेंट कनेक्शन नहीं बनाएगा। सर किसके बीच में नहीं बनाएगा? वेब क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच में। अब इसको समाप्ति की, अगर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को समाप्ति की ओर लेके जाना चाहूं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये क्या करता है, स्टेटलेस क्यों है? क्योंकि जब भी इस वेब क्लाइंट की तरफ से, वेब क्लाइंट की तरफ से जब भी कोई रिक्वेस्ट वेब सर्वर पे जाती है, तो वो उसको क्या करता है, सर्व करता है, बट उसका कोई भी रिकॉर्ड अपने पास रिटेन नहीं करता। कनेक्शन लेस का अर्थ क्या हुआ? नेवर क्रिएट्स अ परमानेंट कनेक्शन। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही उसके पास वेब क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई, उसने उसको सर्व कर दिया, और सर्व करने के बाद जो कनेक्शन उन दोनों के बीच में एस्टेब्लिश हुआ था, वो कनेक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। इसका मतलब है कि कभी भी जब करस्पॉन्डेंस होगी वेब क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच में, तो वो कभी भी परमानेंट कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करेंगे। Very good. Now we just move towards a theoretical part, interaction between web client and web server. What they do, okay, it come after. Delivers data in the form of web files such as text, audio, and video, which we have already discussed. Important to know, स्टेटलेस, अगर वहां पे आपको पूरा प्रॉपर समझ ना आए, और समझ आने का मतलब कि वहां पे अगर पूरी डेफिनेशन ना मिली हो, communications protocol in which no session information is retained by the receiver, usually a server. और नेक्स्ट चीज है कनेक्शनलेस, नेवर क्रिएट्स एनी परमानेंट कनेक्शन। ये कभी भी दो डिवाइसेस जो एक वेब क्लाइंट हो और एक वेब सर्वर हो, उनके बीच में परमानेंट कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करेगा।
नेक्स्ट आया मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आया मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज SMTP. And SMTP is to be called as a simple mail transfer protocol. This is to be called as सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. और मुझे लग रहा है कि शब्दों से आपको व्याख्यान हो गया होगा, आपको पता लग रहा होगा कि यार ये कुछ जो ईमेल्स हम करते हैं या उनके संदर्भ में अगर कोई विचार विमर्श करते हैं तो उसके रिलेटेड कोई बात होगी. अब मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे मेंशन किया और मेरे प्यारे बच्चों के लिए मैंने लिखा SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. वेरी गुड. और एक और चीज मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, वो भी आपको समझाता हूँ, फिर थ्योरी की बात करते हैं. एक मैंने ना इसमें पहले बात की PPP, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. अब मैं यहाँ पे जो विचार कर रहा हूँ आपके साथ, मैं वो विचार कर रहा हूँ जिसमें मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास है POP. POP मीन्स पॉइंट POP means that is to be called as a POP is a point to point protocol. Point to point. Okay, we are not going to talk about point to point. This is to be called as, remember, POP stands for, here it is a post office protocol. Sorry, I'm just going to rectify this thing. POP stands for post office protocol and PPP stands for point to point protocol. POP is post office protocol. Post office protocol. Now you are going to check about that. What is the difference between these two? Okay, simple example I'm just taking, very much simple, that I want to send a mail. I want to send a mail. That what will be the procedure of sending a mail? What will be the procedure of sending mail? Here it is. First of all, my dear respected students, for example, I having one computer here. I'm just going to make one computer here and hopefully it's look good. But I don't know it's look good or not, but hopefully this will look good. Okay, and here it is. Oh, pan gaya. This is a computer. This is a computer, and what we are going to do, my dear respected students, I'm just going to send a mail. I just want to send a mail at a particular address. What I'm going to write here, I'm just going to mention here. That is, for example, abc@gmail.com. This is the address where I want to send the mail. Okay, so what happened here? What is important here? This is ABC is a username and gmail.com. I think so. This is to be called as a domain name. And what happened here? When we are sending this mail, in such case, my dear respected students, for example, we having one thing here which is to be called as, I'm just going to draw here. This is to be called as a DNS mail server. Sir, what do you understand by DNS mail server? My dear respected students, here it is DNS. I'm just going to write DOMAIN, domain. Okay, after that name, after that SERVER, DNS server. I'm going to write here, and we can also write it as, I just want to write it as mail server, because we are talking about a Gmail. It means I supposed to consider it as a Gmail server. I supposed to consider it as a Gmail server, that this is a Gmail server. Okay, and what happened when I'm just going to click on a send button. When I'm just going to click on a send button, what happened, my dear respected students? Here it is. This is supposed to be sent here. I just want to make it more clear. Okay, I'm just going to draw this line and representing here what happened here when we are going to send some mail. When we are going to send some mail, that should be sent SMTP, that is a simple mail transfer protocol. That is to be called as a simple mail transfer protocol, SMTP. Okay.
and then this SMTP send this to a mail server of Gmail. Okay. After that, what happened here? What happened here? When they receive again, here it is internet connectivity. Here it is internet connectivity. We are supposed to consider it as. Here it is that we consider that this is internet. Okay, I'm just going to write here internet. Okay, INTERNET. Okay, it is fine. It's look fine. Okay, internet. Again, here it is. The connection is supposed to be established here, my dear respected students. Again, one more thing is come under the procedure, or again, what happened here? It is. The process is done by SMTP, that is a simple mail transfer protocol, and it send it to internet. And now here it is, TCP is also the part of that. And what we do again, here it is TCP, and IP is come under the existence for sending this data in efficient way with the help of SMTP. Now what happened? Again, there is a connectivity. Again, there is a connectivity here. Okay, and what happened? They send that particular thing. Again, they send that particular data to the domain name server. Here it is. I'm just want to copy this domain name server at which location? At receiver side. Again, here it is, the existence of SMTP is there. I'm going to mention SMTP, but now one thing is going to be changed, my dear respected students. What I'm going to be copy here, I just want to copy this computer from here because it will take some time to draw. I'm just going to consider this as the second PC, or we consider that this is the PC which we consider as the destination, Now what happened? Now why we write it as POP, that is a post office protocol. My dear respected students, now one protocol is used that is only and only for receiving something, that is POP, which stands for post office protocol. तो मेरी बात एक बार कृपया करके जो मैंने आपके चरणों में जो विनती की उसको सुन लीजिएगा। यहाँ से मेल चलना स्टार्ट हुई और यहाँ पे किया क्या, abc@gmail.com, SMTP ने उसको भेजा जीमेल के सर्वर के पास, जो किस साइड पे था, जहां से सोर्स हुआ है, जहां से मेल सेंड की गई। आगे उसी के द्वारा SMTP के द्वारा उसको भेजा गया इंटरनेट के पास, और TCP IP की सहायता के द्वारा वो और आगे भेजा गया। SMTP ने उसको रिसीवर साइड के जो मेल सर्वर था उसके पास पहुंचा दिया। बट अब क्या हुआ, जो मेल को भेजने का कार्य है वो है SMTP का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जो मेल जब रिसीवर साइड के मेल सर्वर के पास पहुंच जाएगी तो वहां पे क्या कार्य है, वहां पे कार्य है POP का, दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। उसका कार्य है कि वो अब मेल को क्या करे, रिसीव करे। और मैं आपसे एक बात पूछूं और आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात बताऊं, जब मेरे पास ना मेरे फोन में या मेरे सिस्टम पे जब मैं लॉगिन करता हूँ जीमेल पे या किसी भी मेल सर्विस प्रोवाइडर पे, तो जो मेल मेरे पास आ जाती है उसको जब मैं क्लिक करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जब भी मैं देखूं, अगर मेरे पास सिस्टम पे या फोन पे इंटरनेट ना हो, चल रहा हो या ना चल रहा हो, तो भी मैं अगर उस मेल पे क्लिक करूंगा तो उसका कंटेंट मुझे नजर आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो कंटेंट कहाँ स्टोर हो जाता है, मेरे लोकल सिस्टम पे, और लोकल सिस्टम की हार्ड डिस्क पे कहा जा सकता है। और जब यहाँ पे ना एक और चीज ऐड करूं, यहाँ पे जो SMTP है, यहाँ पे इस जगह पे जो SMTP है, ये क्या करता है, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। जब SMTP यहाँ पे आया और रिसीवर साइड के मेल सर्वर पे जब इसने इसको प्रोवाइड किया, तो इसने किया क्या, यहाँ पे बहुत सारे यूजर नेम अवेलेबल हैं, एम्पल नंबर ऑफ यूजर नेम्स विल बी देयर। और इसने किया क्या, आप जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात को। जब यहाँ पे मेल सर्वर के पास ये चीज आई तो इसने मेरे बच्चों क्या किया,
इसने यहाँ पे आके ना, मैं ब्लॉक्स बना रहा हूँ सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको समझाने के लिए कि आपको समझ आ जाए, ये सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस जाए अच्छे तरीके से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे यूजर नेम हैं। मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट वांट टू रिड्यूस दिस टेक्स्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट। मैंने यहाँ लिखा फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखा एक्स वाई जेड। आई एम जस्ट कंसिडरिंग एन एग्जाम्पल माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। मैंने यहाँ लिखा एक्स वाई जेड, और मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल पी क्यू आर। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। और मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया ए। मैं यहाँ पे इसको किसी और कलर से मेंशन करना चाहता हूँ। ओके ओके ओके, मैंने यहाँ पे लिखा ए बी सी। मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया मेरे प्यारे बच्चों, और मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी एंड सी। मैंने ए बी सी लिख दिया। अब जैसे ही ना ये SMTP इसको रिसीवर के पास लेकर आएगा, तो उसी क्षण क्या होगा, ये इस टेबल में से चेक करेगा कि वो यूजर नेम जो है, बहुत सारे यूजर नेम यहाँ से चेक करेगा, और जिस भी यूजर नेम को वो रेक्टिफाई करेगा, वो फाइंड करेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर यूजर नेम है जहां पे मुझे डाटा को डिलीवर करना है, उस जगह पे वो मेल्स को क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। और पीओपी का काम क्या है, जब वो मेल सर्वर पे, रिसीवर के मेल सर्वर पे आ गई, तो पीओपी उसको लेके सिस्टम के पास पहुंचाएगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। कैसे, जब हम रिपीट करें, अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में देखिए, तो इस केस में क्या हुआ, अब यहां से अगर इस सिस्टम से अगर आप बेटर क्लैरिटी चाहते हैं, तो मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज कंसीडर एज PC1 एंड दिस इज टू बी कंसीडर एज माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स PC2। इसको हम PC2 बोलते हैं। अब यहाँ से अगर PC2 से कुछ भेजा जा रहा है, तो सेंड किया जा रहा है, तो उस केस में अगर आप देखिए, इसको गौर से सुने, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे अब वर्क करेगा, पीओपी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मेल अब सेंड की जा रही है SMTP। ओके, फिर यहाँ पे आए, इस जगह पे पहुंचे, फिर क्या हुआ, SMTP, वेरी गुड। फिर यहाँ पे पहुंचे, तो यहाँ पे पहुंचे, फिर क्या हुआ, SMTP। और अब यहाँ पे जब वो उसको रिसीव करेगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, दैट शुड बी कॉल्ड एज POP। My dear respected students, hope the thing will be clear, and I'm just going to move towards the theoretical part. SMTP is used for sending email messages to other networks or computer. Okay, वहां पे वो बाद में आया। SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. Second is SMTP is used for sending email messages to other network or computer. It handles only outgoing, जिनको हम भेज रहे हैं, outgoing messages and not incoming messages. It helps in forwarding message between client server. It uses TCP to send message to another host. And next part is, which we already discussed, that is POP. And POP is a post office protocol, where the POP is a post office protocol 3. This is a version. Even we have POP2 and POP also. Is a simple and standard method to access mailbox and download messages to the local computer. The advantage is that once the message are downloaded, an internet connection is no longer needed to read the mail. A user can read all emails offline, as these are saved on the computer's hard disk. To get a mail from POP server, that is a post office protocol, a user must enter the valid username and password for their. Thank you very much, my dear respected students. Thanks for watching, and hopefully the things will be clear to you all, and God bless you.